Yes, hello everyone. Jai Hind. Welcome to the class. Just give me the confirmation if I'm properly audible and visible to you all. Yes. Am I properly visible, audible? Okay. All right. All right. So, yes, I welcome you in this MCQ class 9 of chemistry. As we have discussed earlier, that in the last two classes for chemistry, that is MCQ class 9 and 10, okay, we will be discussing the important concepts और we will be taking up all your doubts. ठीक है, तो आज की क्लास में आई हैव इंक्लूडेड बायोलॉजी डाउट्स, जो आपके बायोलॉजी में कुछ डाउट थे उसको हमने इंक्लूड किया है. And in tomorrow session, that will be the last MCQ class of chemistry. Okay, उसमें हमने we have included the concepts or the doubts for chemistry. ठीक है, जैसे आपको हुन्स रूल में डाउट था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाउट था, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस you are finding difficult. Okay, so we will going to discuss it tomorrow in the last class. Okay, आज की क्लास में हम बायोलॉजी के जो डाउट्स थे आपके वो सॉल्व करेंगे. ओके, डिस्कस करेंगे. चलिए यहाँ पे आज का शेड्यूल देख लेते हैं. देयर इज द चेंज इन द टाइमिंग्स. ओके, यहाँ पे देखिए 8 बजे तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 9 AM पे डेली डिफेंस अपडेट्स है. ओके, एनडीए की क्लासेस में अगर आप देखें तो 11:30 पे जीके है. ओके, 1 पे जीएस है केमिस्ट्री. But 5:30 पे earlier it was English. Okay, but from now onwards you will be having mathematics class. ठीक है, इंग्लिश की क्लास जब भी होगी it will be from 4:30. Okay, right? Today is no English class as you can see, but when it will going to happen, it will be at 4:30 PM. 4:30 to 5:30 will be English, and from 5:30 to 6:30 it will be maths for NDA. ठीक है, सीडीएस के लिए यहाँ पे देखिए 11:30 पे जीके है, 1 पे जीएस है और 7 PM पे मैथ्स. राइट, सो दीज आर द क्लासेस फॉर टुडे. चलिए, कॉन्सेप्ट रिवीजन में वन ऑफ यू हैव आस्क्ड दिस, द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. ठीक है, तो प्लांट और एनिमल सेल का अगर हम एक बेस डिस्कस करें, ठीक है, कि कहाँ से इट हैज स्टार्टेड, और इसको समझने का जो सबसे बेसिक तरीका है वो ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते. लाइक दे कैन नॉट लोकोमोट, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, एनिमल्स आपको पता है मूव करते हैं. अब जो मूव नहीं कर पा रहा है, दे विल बी गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स. बट जो मूव कर रहे हैं उनके पास अलग फीचर्स होंगे, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ठीक है, इसी बेसिस पे प्लांट और एनिमल सेल में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि प्लांट सेल जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर कोई भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो, बी इट द हेवी रेनफॉल, स्नोफॉल, हरिकेन, तो प्लांट को सब कुछ सर्वाइव करना पड़ता है. राइट, ओके, सो प्लांट्स नीड मोर प्रोटेक्शन, इसीलिए प्लांट के पास सेल वॉल होती है. ओके, राइट, टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट. एनिमल सेल्स आपको पता है, एनिमल्स क्या होते हैं, दे कैन लोकोमोट, दे कैन मूव टू द सेफर प्लेस अगर if they are subjected to such harsh climatic conditions. Okay, तो कुछ चीजें ये हैं. देखिए यहाँ पे जो प्लांट सेल है, दे आर यूजुअली लार्जर दैन एनिमल सेल. पहली चीज तो ये डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस. एंड एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर. देखिए यहाँ पे प्लांट सेल में हमें ये तो पता है कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो होता है दैट इज सेल वॉल. ठीक है, जब भी हम जो बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं उसमें प्लांट सेल में हम देखते हैं कि सेल वॉल है, द रीजन वी हैव डिस्कस्ड, एंड एनिमल्स डोंट हैव और दे आर डिवॉइड ऑफ द सेल वॉल. ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है इन द प्लांट सेल एंड इट इज एब्सेंट इन द एनिमल्स. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. वैक्यूल लार्ज और परमानेंट होता है प्लांट सेल में. ठीक है, और एनिमल सेल में स्मॉल होता है, टेम्पररी होता है. राइट, तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. ओके, देन टोनोप्लास्ट, जो दैट द मेम्ब्रेन जो होती है वैक्यूल के अराउंड, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है. ठीक है, एनिमल सेल में देखिए सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है. ओके, सेंट्रियोल दे आर कंसर्न विद रिप्रोडक्शन. उसके बाद न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है, इट इज अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल, नॉट द सेंटर बट द आउटर पार्ट. ओके, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो सेंटर में होती है.
लाइसोसोम्स प्लांट सेल में रेयर हैं और एनिमल सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोरेज मटेरियल स्टार्च ग्रेन है इन द प्लांट सेल एंड इन द एनिमल सेल इट इज ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। सो नाउ यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। अब ये इसका डायग्राम है, ठीक है। देखिए बायोलॉजी में अगर आपको कोई भी डाउट हो, ऑलवेज फॉलो द डायग्राम, ठीक है। सो यू नो व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, हम कैसे पढ़ते थे कि हम डायग्राम से ही पढ़ते थे, लाइक डायग्राम हमने बनाया, उसे कई बार प्रैक्टिस किया एंड जो भी डायग्राम है उसमें स्ट्रक्चर्स को हमने लेबल किया, ओके। सो वंस वी हैव लेबल्ड द स्ट्रक्चर, उसके बाद उससे क्या रहता है, आपको याद रहता है कि क्या क्या पोजिशन है या वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है। सो हाफ ऑफ योर क्वेश्चन विल बी सॉल्व बेस्ड ऑन द डायग्राम ओनली। अगर आपको पता है कि लाइसोसोम का कैसा स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, सो थ्रू द डायग्राम यू कैन इजिली रिमेंबर, ठीक है। तो बायोलॉजी में बिल्कुल आप डायग्राम की हेल्प लीजिए, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ओके, इन ऑर्डर टू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग, ओके। तो पढ़ाई करने का देखिए एक तरीका होता है, सो ट्राई टू स्टडी स्मार्ट, ओके। तो स्मार्टली पढ़ने के लिए डायग्राम्स के थ्रू आप स्ट्रक्चर समझिए, ओके, और फिर उसके फंक्शन साइड बाय साइड आप लिख सकते हैं, ओके। So this is the right way or right approach, okay. Then one of you have asked about the parts of flower or the function of flower, right? तो यहाँ पे देखिए जो फ्लावर होता है उसके ये 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो हो जाता है सेपल जो ग्रीन कलर का आपको दिखता है, फिर पेटल जो कलर्ड पोर्शन होता है, ओके, द पेटल दे आर कलर्ड, यूजुअली वाइट भी होता है एंड दे आर कलर्ड ऑल्सो, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो स्टेमन होता है। तो ये पूरा स्टेमन है, दिस इज होल स्टेमन। तो ये पूरा स्टेमन है, इसको हम कहते हैं एंथर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। एंड टुगेदर इट इज नोन एज स्टेमन और एंड्रोशियम, इसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी के अंदर, एंथर के ही अंदर एंथर लोब्स होते हैं जिसमें आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स दे गेट ट्रांसफर्ड एंड यस, दिस इज हाउ द पॉलिनेशन अकर्स एंड लेटर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम कार्पेल की बात करें तो ये पिस्टल है, ठीक है, कार्पेल है, पिस्टल है, इसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये जहां पे पोलन ग्रेन लैंड करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपको स्लेंडर सा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम कहते हैं स्टाइल, और फाइनली देयर इज दिस ओवरी। ओवरी के अंदर क्या हो जाएगा, ओव्यूल हो जाएगा, ठीक है। सो ओवरी के अंदर ओव्यूल हो गया, ठीक है, राइट। सो होता क्या है, पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एंड देन इट it develops a pollen tube, it enters the ovary, okay, it enters through the ovary, through the micropyle, और फिर उसके बाद फ्यूजन होता है, ठीक है, राइट। सो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें एक जो स्पर्म होता है वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और एक स्पर्म पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये तो पार्ट है। अब फंक्शन देखिए, फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस पोलन, दे कंटेन मेल गैमीट्स which is transferred to the stigma of another flower for fertilization. Ovary within the flower houses female gametes and become the fruit after fertilization. Flower attract pollinators such as insects or birds, facilitating cross-pollination, genetic diversity. Petals and scent help attract pollinators. Okay, so जो petal है, scent है, that attract pollinators. Flowers also contribute to seed dispersal as fruits develop from fertilized ovaries, okay. Enclosing seeds that are dispersed by wind, water, animals. Flowers play a pivotal role in plant reproduction, genetic variation and ecosystem dynamics, ठीक है। सो बेसिकली आप देख रहे हैं कि कैसे हर पार्ट जो होता है प्लांट का, जैसे पेटल्स है, उनका क्या फंक्शन है, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, तभी पॉलिनेशन होगा, ठीक है।
right? And yes, the reproductive parts are the male and the female part, that is androecium and gynoecium. पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है. सो फ्लावर का जो मेन फंक्शन है, सिंस इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये आपके एक दो क्वेश्चन थे बायोलॉजी में. ओके, कल जो हमारा लास्ट क्लास होगा एमसीक्यू का, इन दैट क्लास आई हैव इंक्लूडेड balancing of equation, okay, Hund's rule, redox reaction, okay, whatever were your doubts. So we will going to discuss it tomorrow. So any more doubts if you have, you can just let me know in the chat box, so I can include that as well. ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट है, आप चैट बॉक्स में उस टॉपिक को मेंशन कर दीजिए. आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट in the last class. Okay, tomorrow is the last. All right, so let's start with the MCQ. So any more doubts now? Are you clear with these things? Yes, whatever we have discussed. अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए. Yes, क्लियर है. ठीक है, चलिए अब MCQ करते हैं केमिस्ट्री के. ओके, चलिए यहाँ बताइए, which one of the following elements will replace hydrogen from acids to form salts? Sulfur, silicon, zinc or phosphorus? So I have been telling all of you, so please go through the reactivity series. Okay, अगर आपको reactivity series याद होगा तो आप easily आंसर कर सकते हैं. Okay, so especially on the mole, see, we are discussing whole of the previous year questions also. तो इसमें mole concept के भी हैं. Do you want numericals? Yes, are you talking about the numericals especially? Yes, yes, definitely. Okay, so I'm going to include some of the numericals. ठीक है, देखिए जो numerical आते हैं mole concept में, वो बहुत ही simple होते हैं, means like easy to moderate आते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा difficult नहीं आते. So I can include it some of the uh, numericals on mole concept. Okay, anything else? Please mention in the chat box. Okay. Yes, please feel free to ask your doubts. Okay, ठीक है. Okay, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा. All right, so let me note this down to include the numericals as well. Just answer this question meanwhile. So we are, already discussing last 10 years, previous year, questions for last 10 years. So like all of the questions that has been asked from the mole concept is already covered. But yes, we will going to discuss especially the numericals. ठीक है, चलिए इसमें बताइए क्या आंसर होगा. Which of the following elements will replace hydrogen from acids to form salt? Okay, yes, it is C, zinc. Okay, it is highly reactive. So it reacts with acids such as HCl to form zinc chloride and liberates hydrogen gas. Okay. चलिए next बताइए, which of the following represent a chemical change? Magnetization of iron, condensation of liquid, burning of fuel or rusting of iron? Okay, so anything else? See, अगर आपको कहीं पे भी कोई doubt है ना, you can just write your doubts in the chat box. Whatever topics. I think you all must have revised each and every topic by now and must be doing questions, right? तो अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको conceptual problems हैं, ठीक है, right? So you can just let me know. अच्छा, इसमें कौन सा केमिकल चेंज है? सी. चलिए देखते हैं. Yes, C is the correct answer. 3 and 4. Burning of fuel, rusting of iron, because these are irreversible process. Okay. And इसमें न्यू प्रोडक्ट बन रहा है. देखिए प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है. दिस इज द श्योर शॉट टू आइडेंटिफाई द केमिकल और द फिजिकल चेंज. दूसरा एक तरीका है टू चेक वेदर द फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजिंग, तो फिजिकल चेंज है. वेदर द केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजिंग, तो केमिकल चेंज. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. Next is, which one among the following is the correct order of reactivity of the elements? Copper, magnesium, zinc, sodium. Yes, यहाँ पे correct order क्या है reactivity?
इट्स डी। देखिए इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए पहले पे कहाँ है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है और कॉपर है। वेयर इज कॉपर? डाउन हियर, राइट। तो देखिए ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। दिस विल, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो। ओके नेक्स्ट बताइए, लिस्ट 1 और 2 है, यू हैव टू मैच इट। ओजोन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। डी, लेट्स सी। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ए का हो जाएगा 2। ओके, ओजोन गैस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बी का हो जाएगा 5, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। देन सी का 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कॉम्पोनेंट ऑफ एयर इन स्मॉल क्वांटिटी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो डी इसमें करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट बताइए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए देखिए अलोट्रोप्स भी, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे यूजुअली क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ग्रेफाइट के लिए क्या करेक्ट नहीं है? इट इज द मोस्ट स्टेबल allotrope of carbon. It is electrically conducting material. Crystalline spherical beads of graphite have very good lubricating property under dry condition. It is the highest grade of coal. Yes, ठीक है। देखिए anthracite is that is the highest grade of coal, और ग्रेफाइट का कोल से कोई भी रिलेशन नहीं है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। और एक चीज याद रखिए कि अमंग ऑल द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इट इज द ग्रेफाइट दैट इज हैविंग द दैट इज अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल है, स्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का, एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, so they have very good lubricating property under dry condition. तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। इसमें से सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? सॉल्ट हैव ordered packing arrangement called lattices. Salts have low melting points but high boiling points. Salts are brittle. Salts conduct electricity when dissolved in water or even in the molten state. Yes, salts have low melting point but high boiling point. This is wrong. Okay. Okay, salt actually have a high melting and boiling point due to strong ionic bonds between the ions. So ये भी हमने डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट को कि अगर आपको किसी में देखना है हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो हमेशा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रांग है कि वीक है। वीक होगा फोर्स तो बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जाएगा और जल्दी ही वो मेल्ट कर जाएगा और बॉईल कर जाएगा। सो जिसमें कि वीक आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बट क्योंकि सॉल्ट में जो होता है स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है, सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, next is which among the following statements with regard to pH scale is or are correct? It is a logarithmic scale. The scale is limited to 1 to 14 because the ionic product of water is about 10 to the power minus 14. The lower the value of pH, the greater is the acidity of the solution. Yes, इसमें आपको बताना है कि pH के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है।
Yes, what should be the correct answer? C, A. Okay, two different answers I am getting. देखिए यहाँ पे ओके सो द आंसर इज नॉट मार्क बट लेट्स चेक ओके। देखिए लॉगरिथमिक स्केल होता है तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, इसका मतलब कि डी आपका आंसर नहीं होगा। द स्केल इज लिमिटेड टू 1 to 14 यस बिकॉज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सेकेंड भी ठीक है ओके। द लोअर द पीएच द ग्रेटर इज द एसिडिटी, सो ऑल ऑफ इट इज करेक्ट ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा। आई एम गोइंग टू मार्क इट इन द पीडीएफ बट यहाँ पे ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यस ओके। चलिए नेक्स्ट बताइए। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, is oxidized itself in an oxidation reduction reaction, loses electrons in an oxidation reduction reaction. Yes, जो oxidizing agent है what does it do? Yes, try. देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन हो रहा है। अब बताइए रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या घटता है, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू कहीं भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है आप उसके ऊपर रिडक्शन लिख लीजिए एंड देन ट्राई टू आंसर इट अकॉर्डिंगली ओके। वी विल गोइंग टू डिस्कस होल ऑफ द रिडॉक्स टुमारो, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ डाउट्स हैं आप लोग के। यस, ट्राई टू आंसर दिस वन। वेरी सिंपल वन, ट्राई। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है या बढ़ता है? इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? रिड्यूस होना मतलब क्या होता है? कम, ठीक है। इससे आप याद रखिए कि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कम होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, जस्ट मार्क इट एज बी हियर ओके। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। देखिए यहाँ पे जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहीं भी लिखा हो आप उसके ऊपर रिडक्शन लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन को करने वाले को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब आप रिडक्शन को ध्यान में रख के सॉल्व करिए क्वेश्चन कि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। इज ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? नहीं ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है, तो ये भी नहीं सही है। लूजेस इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस होता है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व लाइक दिस okay। Next, neutral water with pH about 7 becomes slightly acidic when aerated. This is because oxygen from air is dissolved in water, which makes the water acidic. Dirt which gets contaminated with the water during aeration makes the water acidic. Ultraviolet radiation dissociates water molecules and makes water acidic, or carbon dioxide from air is dissolved. Yes. D. Okay. Yes, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज डिसॉल्व्ड ओके। तो न्यूट्रल वाटर है, पीएच 7 न्यूट्रल ही होता है। ये अगर एसिडिक हो रहा है मतलब पीएच कम हो रहा है, ठीक है। तो एसिडिक इसलिए हो रहा है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होता है ये कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि एक वीक एसिड है, ठीक है। तो ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। So D will be the correct answer. Next is calcium carbonate is naturally available as limestone and can also be synthesized from quicklime. It is seen that the composition of elements in both the natural and synthetic calcium carbonate are same. The validity of which one among the following laws is confirmed by this observation? Law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, or Avogadro's law? Yes. कैल्शियम कार्बोनेट ये लाइमस्टोन के फॉर्म में भी अवेलेबल है नेचुरली, और इसे हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं?
कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर को ऐड करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम जिसे हम कहते हैं। अब ये जो स्लेक्ड लाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कैल्शियम कार्बोनेट का इन ऑर्डर टू फॉर्म इट इन द लैब। और नेचुरली किस फॉर्म में अवेलेबल है? एज लाइमस्टोन। इट इज सीन कि कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ, तो वो चाहे नेचुरल फॉर्म हो चाहे वो सिंथेटिक कैल्शियम कार्बोनेट हो, कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, so which law confirmed this observation? This is the question. Yes, law of definite proportion, B यहाँ पे correct answer होगा। Okay, so I'm going to write in the PDF. Okay, the options are not mentioned here, so I'm going to make the changes. Okay, next आपको ये बताना है when aqueous solution of two salts are mixed। ठीक है, एक्वस का मतलब हो गया वाटर। दो सॉल्ट का जब हम एक्वस सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, थर्ड सॉल्ट फॉर्म में अपीयर एज अ सॉलिड प्रेसिपिटेट और अ क्लियर सोल्यूशन। अब आप इस चीज को समझिए कि जो घुल जाता है, ठीक है, जो डिसॉल्व हो जाता है वो क्लियर सोल्यूशन बनाएगा। जो डिसॉल्व नहीं है हो पाता है वही सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द solubility of its ions. So it is observed that all salt of sodium, potassium, ammonium are soluble. All nitrates and bicarbonates are also soluble. All halides are soluble except those of silver, mercury, lead. All sulfates are soluble except those of silver, calcium, barium, lead. So which one among the following combination of solutions will produce a solid precipitate? B, barium sulfate. ओके, देखिए इसमें ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, यस दे विल गोइंग टू फॉर्म व्हाट? बेरियम सल्फेट ओनली। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी सल्फेट्स हैं वो सॉल्युबल हैं, लेकिन किसके सल्फेट सॉल्युबल नहीं है? सिल्वर के, कैल्शियम के, बेरियम के और लेड के। बेरियम क्लोराइड इज सॉल्युबल बिकॉज ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट दोज ऑफ सिल्वर, मर्करी एंड लेड। ये आपको क्वेश्चन में ही मेंशन था। इसीलिए जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हम मिक्स करते हैं तो बेरियम सल्फेट का हमें सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलता है। और यही यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाएगा। इसका मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करके जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो हमें चाहिए था वो डिसॉल्व ना हो, तभी वो सॉलिड प्रेसिपिटेट वो दिखेगा हमें। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए हियर। Okay, next is a mixture containing SiO2, NaCl and NH4Cl is taken for separating the constituents. The suitable steps required for this are, अब ये isolation technique से है कि आपके पास ये mixture दे दिया गया है, अब आपको इसको separate करना है। आप कौन कौन से process को, कौन कौन सी techniques को follow करेंगे? First try it on your own, then we can discuss. C. Okay, so one of you were asking about how to, approach the subject chemistry and biology. आप कैसे पढ़िए? So I have already told you. Let me tell you this again. सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट का, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, नो योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में जो भी हो उसके हिसाब से आप कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करिए, जो आपको पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, दैट इज इनफ। बट yes, if you want additional information, okay, so you can refer the NCERT. ठीक है, राइट। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपको देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी करवाए हुए हैं, बट देयर इज वन बुक ऑफ अरिहंत पाथफाइंडर, उसमें आपके पास दे हैव डिफरेंट सेक्शंस, जिसमें कि जनरल साइंस का एक अलग सेक्शन है उसी बुक में,
ओके और उसमें आपको फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ओके सो आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओनली। तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, राइट। एंड देन once you are have practiced enough of the questions, please go for the mock test, ठीक है, राइट। और फिर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट, आप क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट का रिवीजन करिए, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जब आप आंसर चेक करते हैं, अलॉन्ग विद द आंसर आपको वो पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, ओके, विद द आंसर, सो प्लीज गो थ्रू दैट, ओके। और यहाँ पे इफ यू आर डन विथ ऑल ऑफ दिस थिंग्स देन इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आपके कोई डाउट्स हैं, ओके, so we do have a doubt board, okay, you can ask your doubt there also if there is no classes, जैसे अभी क्लास, लास्ट क्लास कल खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, so I do check it regularly, you can post your doubt in that, okay, in the doubt board, right। चलिए, yes, let's talk about this question। इसमें करेक्ट आंसर है सब्लिमेशन, ओके। तो जब हम NH4 अमोनियम क्लोराइड जब हम हीट करते हैं इसको, तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड दीज टू, ओके। So sublimation में remaining mixture now consists of these two. Further separate them, mixture is dissolved in soluble solvent. Now these are soluble in water, thus forming a homogeneous solution. इसके बाद हम filtration करते हैं solid को liquid से separate करने का, और इसी से हम undissolved SiO2 को NaCl solution से separate करने, okay? So A is the correct answer. Next is iodized salt क्या है? Mixture of potassium iodide and common salt. Mixture of molecular iodine and common salt. Compound formed by combination of potassium iodide and common salt. Compound formed by combination of molecular iodine and common salt. Yes, iodized salt. Yes, so the correct answer is mixture of potassium iodide and common salt. ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और कॉमन सॉल्ट को ही हम आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बताइए यहाँ पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रोसेस? डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट, प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सीवीड्स, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। यस, यहाँ पे कौन सा केमिकल प्रोसेस है? यस, प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सीवीड्स, ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बताइए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स इज नॉट करेक्ट? A mixture shows the properties of its constituents, but the property of a compound are entirely different from its constituents. A mixture may be homogeneous or heterogeneous, but a compound is homogeneous substance. The constituents of a mixture can be separated by physical methods, but those of a compound cannot be separated by physical methods. Energy is either absorbed or evolved during the preparation of a mixture, but not in the preparation of a compound. D. Yes, energy is either absorbed or evolved during the preparation of mixture and not in the preparation of compound. ये गलत है, okay? Why it is wrong? Because energy absorbed और evolved होती है mixture के preparation में भी और compound के preparation में, ठीक है? I have told you कि जब भी आप elements, compounds, mixture पढ़े, हमेशा आप example से याद रखिए, ठीक है? देखिए, compound का example क्या होगा वो नहीं, example से compound की property, example से mixture की property, okay? ठीक है, जैसे मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब एक मिक्सचर में डिफरेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और वो सब विजिबल होती है, दे विल गोइंग टू शो ऑल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, बट जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन वैसे अलग एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं, NaCl कंपाउंड बनाते हैं, तो ये NaCl की प्रॉपर्टी ना ही सोडियम जैसी होगी ना ही क्लोरीन जैसी होगी, इसकी प्रॉपर्टी
कुछ अलग होगी, ओके, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है, राइट। उसके बाद मिक्सचर में तो आपको पता है, मिक्सचर में जो भी प्रेजेंट होगा उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। मिक्सचर होमोजेनस भी होता है, हेट्रोजेनस भी होता है, लेकिन कंपाउंड आपको होमोजेनस ही मिलता है, दिस इज करेक्ट, ओके। देन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बट जो कंपाउंड है वो आप फिजिकल मेथड से, आप NaCl को कोई फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते, यू नीड सम केमिकल मेथड टू ब्रेक द बॉन्ड टू सेपरेट देम, ठीक है। तो इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, लाइक दैट इज द नॉट करेक्ट वन एंड दैट विल बी आवर आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट बताइए, लाइमस्टोन पीस इज डिप्ड इन वाटर, अ बबल इवॉल्व्स, द बबलिंग इज ड्यू टू। लाइमस्टोन का मतलब क्या हुआ, ऊपर लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको वाटर में डिप करेंगे तो बबल होगा, तो ये जो बबल्स होते हैं किसके होते हैं, यस, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट इज इफ itching due to insect bite is caused by formic acid, acetic acid, lactic acid और malic acid। जो itching होती है इंसेक्ट बाइट से, ये किस वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड से, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मैलिक एसिड। यस, दिस इज करेक्ट, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ओके। नेक्स्ट बताइए, which among the following elements is abundant on the lunar surface and holds the potential to put an end on the energy crisis of the earth? It's helium-3, correct. Okay, a milkman puts banana leaf in milk jar because banana leaf gives a fresh flavor to milk, makes the milk acidic and resistant to yeast, make the milk basic and resistant to yeast, or increases the whiteness of milk. Yes, makes the milk basic and resistant to yeast. Okay. नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है आपको कि सोर्स क्या है, वाइन, बियर, विस्की और रम, ओके। सो फ्रॉम विच ऑफ these it is obtained, try to match। यस, देखिए वाइन जो है वो ग्रेप्स से बनाया जाता है, बियर जो होता है वो बार्ली से बनाया जाता है, विस्की जो होता है मोलासेस से बनाया जाता है, और जो रम होता है दैट इज फ्रॉम द शुगर केन जूस। तो ए का क्या हो गया, ए का हो गया 3, ए का 3, ओके, बी का बियर 1, ओके, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। Okay. Next is the cleaning of dirty clothes by soaps and detergents is due to the type of molecules called surfactants, which are present in soaps and detergents. The surfactant molecules remove the dirt by making the cloth slippery, then producing some gases between the dirt and the cloth, dissolving the dirt, forming some aggregates of themselves, and take away the dirt in the core of aggregate. देखिए सेम क्वेश्चन ये कई बार आया है, ठीक है। यस, इट इज डी ओनली, माइसिली का जो फॉर्मेशन होता है आप देख सकते हैं कि दे हैव दिस हाइड्रोफिलिक पोलर हेड एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल। तो पोलर हेड जो है ये हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक मतलब अट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये वाटर की तरफ होगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और जो हाइड्रोफोबिक होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द स्टेन, ओके, राइट, बिकॉज इट इज वाटर रिपेलिंग। सो दे विल गोइंग टू फॉर्म दी सच स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको माइसिली दिख रहा है, ओके, स्फेरिकल structure है, और along with the water the stain also gets removed because of the surface tension, it decreases, okay। Next is the most familiar form of radiant energy in sunlight that causes tanning and sunburning of human skin, उसको हम क्या कहते हैं, ultraviolet radiation, visible radiation, infrared radiation और microwave radiation। यस, देखिए इसमें करेक्ट आंसर ये आ जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
Next is the polymeric fiber used as a substitute for wool in making synthetic blankets, sweaters, etc. is nylon, Teflon, Orlon और Bakelite. Yes. जो polymeric fiber होता है, ये देखिए polymer पे question है ये. Blankets, sweaters बनाने के लिए जो use होता है. Yes, that is Orlon. ठीक है. नेक्स्ट इज, इसको भी आपको मैच करना. देखिए अलॉय है, ये बहुत ही सम ऑफ यू मस्ट बी फाइंडिंग इट कंफ्यूजिंग एज वेल, बट इसको अगर आप याद कर लेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है. सोल्डर, ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील. यस. व्हाट इज प्रेजेंट इन दीज अलॉय? व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट? सी इज द करेक्ट आंसर. देखिए ए सोल्डर है, इसका हो जाएगा आयरन एंड कार्बन. ठीक है. ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का होता है. ब्रॉन्ज इज कॉपर एंड टिन एंड स्टील इज lead and tin. Okay, so basically आप देख रहे हैं they are already matched. Okay, just a minute. Solder B. Yes, this combination is correct. Hold on. A should be correct here. 1, 2, 3, 4 only. Okay, next बताइए यहाँ पे. Yes, steel is iron and carbon only. Okay, just a minute. It should be C only, right? Just a minute. Yes, yes, yes. Okay, just let me check it once. Okay, but what about brass and bronze? Yes, brass और bronze का तो clear है, right? Yes, steel is iron and carbon. Lead and tin, yes, you are correct. Okay, solder का हो जाएगा 4. A का 4. Okay, these could be the answers. Then steel is iron and carbon, correct. Okay. Okay, first let me check it once, okay? ठीक है? And I'm going to make the correction in the PDF if it is required. देखिए brass और bronze का तो clear है. Brass is what? Yes, brass तो copper और zinc होता है, bronze copper और tin होता है. This is correct, right? Solder and steel we know this is iron and carbon. Yes, correct. यही correct होगा. Okay. चलिए next बताइए. List 1 and 2. CFL lamp, automobile battery, polymer, diesel engine. Yes. Yes, the correct answer for this. B. Okay. B means CFL lamp, mercury, automobile battery with lead, polymer with phthalates, then diesel engine, nitrogen oxide. Yes. Okay, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A का 4, then B का 3 है. Okay. B is the correct one, right? हाँ, B is the correct. चलिए next बताइए. Which one of the following chemicals is commonly used by farmers to destroy weeds? DDT, malathion, methyl bromide, 2,4-D.
Yes, the correct answer is 24D. ठीक है, 24 इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताइए, ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ सीमेंट द स्ट्रक्चर हैज टू बी कूल्ड बाय स्प्रेइंग वाटर, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट अंडरगो हाइड्रेशन ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, ए करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, स्कूबा डाइवर्स आर एट रिस्क ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ dissolved gases while breathing air at a high pressure underwater. The tanks used by scuba divers are filled with. Yes. क्या आंसर होगा इसमें? A. Yes, it is diluted with helium. ठीक है, राइट। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पे लिस्ट 1 और 2 है, आपको मैच करना है। सेलोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है और सुक्रोज है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ए। ए का मतलब क्या हो गया? ए का 3। सेल्यूलोज आपको पता है कॉटन वूल होता है, ठीक है। फ्रक्टोज, यस, फ्रक्टोज इज प्रीडोमिनेंट शुगर इन हनी। हनी में और भी शुगर्स होते हैं, इसमें फ्रक्टोज वन ऑफ द मेन शुगर। करेक्ट। सी का 4, सी का 4 माल्टोज स्टार्च, ओके, एंड सुक्रोज शुगर केन। यस, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, okay, next, please try to answer. The law of enforcement agencies used a chemical test to approximate a person's blood alcohol level. The person undergoing the test blows into the mouthpiece of a bag containing sodium dichromate solution in acidic medium. A chemical reaction with ethanol changes the color of the solution from orange to green, orange to colorless, yellow to orange, or colorless to orange. Yes. Yes, orange to green is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। Atomic size, valency, radioactivity or electronegativity, like does not show any trend on moving from one side to the other side of periodic table. Atomic size है, valency है, like periodic table में किसका वेरिएशन नहीं देखा जाता? Atomic size चेंज होता है कि नहीं होता, वैलेंसी चेंज होती है, रेडियो एक्टिविटी चेंज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल वन, यस इट्स रेडियो एक्टिविटी। पूरे पीरियोडिक टेबल में जब आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज नॉट एट ऑल मेंशन्ड देयर। ओके, एटॉमिक साइज का इंक्रीज डिक्रीज देखा जाता है। ओके, वैलेंसी भी चेंज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होती है, राइट। Okay, next we move to this one. Okay, consider the following statements regarding the properties and uses of glass wool. Glass wool has tensile strength greater than steel. Glass wool is fireproof. Glass wool has high electrical conductivity and absorbs moisture. Glass wool is used to prepare fiber glass. Glass wool के बारे में कौन सा statement correct है? It's A, 1 and 2 only. ठीक है, 1 and 2 only. Okay, next बताइए, which one among the following reducing agents can also act as an oxidizing agent? इसमें से कौन सा है जो reducing agent भी है और oxidizing agent भी है, मतलब ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है और रिडक्शन में भी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयोडाइड।
देखिए इसमें करेक्ट आंसर सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बेकिंग सोडा और विनेगर। यस, नॉट अ मिक्सचर। ओके, बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। नेक्स्ट बताइए, व्हाई आर इनर लाइनिंग ऑफ हॉट वाटर गीजर मेड अप ऑफ कॉपर? कॉपर हैज लो हीट कैपेसिटी, copper has high electrical conductivity, copper does not react with steam, or copper is a good conductor of both heat and electricity. Yes, this question has also been repeated so many times. Copper does not react with steam is the correct answer. Okay, next question. A woman desires to clean the surface of her gold ornaments by a chemical approach. For this, she requires to use aqua regia, concentrated sulfuric acid, concentrated sodium hydroxide, or sodium thiosulfate solution. Yes, it's aqua regia. Aqua regia होता क्या है? Aqua regia एक्चुअली नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है। ठीक है, इसी को हम एक्वा regia बोलते हैं। ओके, next is which one among the following has been producing or can produce light by chemical change? Sun, moon, electric bulb, lightning and thunder. Yes, correct. It is A, that is sun. Okay. So, yes, it can produce light by chemical change. Okay. A few questions are left. Let's discuss that also. I hardly 3 questions. Okay. Which among the following are the most important raw materials for manufacturing of soap? सोप को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए? फैट्स एंड कॉस्टिक एल्कली, फैट्स एंड पोटैश, फैट्स एंड एसिड, वेजिटेबल ऑयल एंड पोटैश। Yes, so the correct answer will be A, fats and caustic alkali. ठीक है, next is chemically silk fibers are predominantly protein, carbohydrate, complex lipid, mixture of polysaccharide and fat. Yes, जो silk fibers होगा, yes, that will be protein. Okay, all right. This is the last question. ये दो list है compound and shape of molecules. ठीक है, तो ये आपको बताना है CH3F, HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, NH3 इज अमोनिया, मिथाइल फ्लोराइड इज CH3F। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या क्या होता है। CH3F का होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, इसमें होता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, HCN का लीनियर स्ट्रक्चर होता है और NH3 का ट्राइगोनल पिरामिड। ओके, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस for today. Tomorrow will be the last MCQ class, and in that we will be discussing balancing of equations, important numericals on mole concept. Okay, then Hund's rule, its electronic configuration 1s2 2s2. ठीक है, ये भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। Then we will going to talk about redox reaction. ठीक है, होल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कि कोई भी रिएक्शन आपको देख करके समझ आ जाए वो रिडॉक्स है कि नहीं, what is oxidizing agent, what is reducing agent. We will going to discuss everything tomorrow. Okay, anything else that needs to be added to that? Yes, कोई और डाउट है आपका? Yes, because tomorrow will be the last class, right? So if you have any more conceptual doubts, you can ask. Clear, everything else is clear. ठीक है, so please keep practicing questions from your end. Do go through the reactivity series, आपको याद होना चाहिए. Okay, I'm saying this again and again because it is of utmost importance. Okay, ठीक है, उसके बाद जो कंपाउंड्स के नेम है, फॉर्मूले हैं, वो आप जरूर देख लीजिए. ओके, क्रोमैटोग्राफी से क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं क्रोमैटोग्राफी से. ओके, बट इफ यू वांट वी कैन डिस्कस क्रोमैटोग्राफी आल्सो. ठीक है, राइट? ओके, सो लेट मी ऐड दैट आल्सो, क्रोमैटोग्राफी. देखिए क्वेश्चंस लाइक हमने डिस्कस भी किए हैं, हार्डली 2-3 क्वेश्चंस आए हैं इन द लास्ट 5 to 8 years. ओके, बट वी विल गोइंग टू डिस्कस अगर आपको कोई भी डाउट है इन एनी पार्ट. ओके, सो जो क्वांटम नंबर्स था, जो द नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड, उसमें अगर आपको कोई डाउट है सो डू लेट मी नो.
Chromatography. Okay. ठीक. Okay, mole concept, numericals, chromatography, two things more. Okay, anything else? No doubt. ठीक है. क्रोमेटोग्राफी भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, आपको एक बेस आपका क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है, उसका यूज क्या है. ठीक है, वी विल नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्योंकि उतना डिटेल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता. ठीक है, बट एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए. ठीक है. ओके, सो लेट्स एंड द क्लास हियर. यस, एनी मोर डाउट्स एनीवन? Yes, can we end the class? Right? Okay, all right. So let's end the class here. Please keep practicing questions from your end. Take your studies seriously. Work very hard for it. Okay? Okay, so ending the class on this. Thank you so much, everyone.